Good morning, students. Our today's topic is air expand on heating. In activity 8.5, taking a boiling tube, stretch a balloon tightly over the neck of the tube. You can use a tape to make it tight. Pour some hot water in a beaker, insert the boiling tube with the balloon in the hot water. Observe for 2-3 minutes for any change in shape of balloon. Take the tube out, let it cool down to the room temperature. Take some ice cold water in another beaker and place the tube with the balloon in cold water for 2-3 minutes and observe the change in the shape of the balloon. हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे ऊपर जो है हम एक बलून को उस पर टाइटली स्ट्रेच कर देते हैं, बलून को लगा देते हैं और उसे अच्छे से टेप की हेल्प से उसे टाई अप कर देते हैं। अब हम एक बीकर में हॉट वाटर लेते हैं और इस जो हमारी बॉइलिंग ट्यूब है उसको फिगर 8.5 के जैसे हम उसमें बीकर में रख देते हैं। अब 2-3 मिनट तक वेट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि क्या बलून के शेप में कोई डिफरेंस चेंजेस हो रहा है। सेम प्रोसेस हम दूसरे बीकर में कोल्ड वाटर लेते हैं और इस बॉइलिंग ट्यूब को उस कोल्ड वाटर में रखते हैं और फिर उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं क्या बलून के चेंजेस में कोई चेंज बलून के शेप में कोई चेंज आ रहा है या नहीं। Think and try to the answer. What make the balloon inflate when the boiling tube is placed in hot water? अब हमें देखना है कि जब बलून ट्यूब को हम हॉट वाटर में डालते हैं और उसे कोल्ड वाटर में जब डालते हैं तो इनमें क्या चेंजेस होते हैं। The next activity is very interesting. This will make you understand more about hot air. जो नेक्स्ट एक्टिविटी 8.6 जो है इसमें हम एयर को और भी ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, हॉट एयर को। नाउ एक्टिविटी 8.6, टेक 2 पेपर बैग्स और एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज एंड हैंग अप 2 बैग इन द inverted position on the 2 ends of the metal rod or wooden stick. अब हमें 2 पेपर बैग्स या फिर 2 खाली पेपर कप्स लेने हैं और इसे एक वुडन स्टिक या फिर एक मेटल के स्टिक में हम क्या करते हैं, इसे बोथ साइड टाई अप कर देते हैं, इसे अच्छे से टाई अप कर देते हैं। टाई अ पीस ऑफ थ्रेड, और अब हमें इसे धागे से जो है इसके मिडल से इसे टाई अप अच्छे से कर देते हैं। होल्ड स्टिक बाय थ्रेड द बैलेंस, और हमें इस स्टिक को अच्छे से होल्ड कर देते हैं लाइक फिगर 8.7। नाउ पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग एज शोन एज फिगर। अब हम एक जलती हुई कैंडल को फिगर 8.7 के जैसे एक पेपर बैग के नीचे रखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि उस क्या होता है। वाई इज द बैलेंस ऑफ the bags disturbed? Does this activity indicate that warm air rise up? As the warm air rise up, it pushed the bag above the candle. Does the disturbance of the balance suggest that the warm air is lighter than the cold air? अब हम इस एक्टिविटीज़ में देखते हैं कि जैसे ही जो कैंडल को इस बैग के नीचे रखते हैं तो ये जो बैग है वो ऊपर की ओर होने लगता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो कैंडल से निकलने वाली जो हॉट एयर होती है वो उसका वेट होता है वो बहुत ही लाइट होती है, और जो कोल्ड एयर होती है उसका वेट जो होता है हॉट एयर से थोड़ा ज़्यादा होता है। नाउ वी कैन से दैट द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। जो वार्म एयर होती है वो कोल्ड एयर से ज़्यादा लाइट होती है। नाउ एक्टिविटी 8.4, wind current are generated due to uneven heating on the earth. These situations are, first situation is uneven heating between the equator and the poles.
You might have learned the geography that region close to the equator get maximum heat from the sun. The air is these region is get warm. The warm air rise the cooler air from the region in the 0 to 30 degree latitude belt on either side of the equator moves in. These winds blow from the north and the south toward the equator. At the poles, the air is cold than that at situated latitude about 60 degree. When the warm air at these latitudes rise up and the cold wind from the polar region rush in to take its place. In this way, wind circulation is set up from the poles to the warmer latitude as shown as figure 8.8. Now, second is uneven heating of land and water. You have read about the sea breeze and the land breeze in chapter 4. In summer, near the equator, the land warms up faster and the most of the times the temperature of the land is higher than the water in the ocean. The air over the land gets heated and rise. This causes the wind to flow from the ocean towards the land. These are monsoon wind. So the monsoon wind carry water and rains. That means clouds bring rain and give us happiness. Farmers in our country depends mainly on rains on their harvest. There are many folk songs associated with clouds and rain. Sing and enjoy with your friend. If you know such a song, here is one for you. So this is in this here a poem given, a song given. Now, however, is it not always a happy ending? Rains often create problems. Can you list some of the problems? You can discuss the cause and the solution of the problems with your teacher and parents. In the nature itself, there are certain situations that can sometimes create disasters and pose threat to humans, animals, and plant life. Let us study two such situations like thunderstorm and cyclone.